Hi everyone, welcome back to the channel Bioinformatics with Vaishnavi. If you are starting to learn bioinformatics or working with sequencing data, you will often hear the terms like reads, read length, pair end sequencing, single end sequencing, and the depth of coverage. For beginners, these terms can sound confusing at first. So, in this video, I am going to explain these important NGS concepts in a very simple and practical way so that when you start working with sequencing data, these terms will make complete sense. Before diving into the topic, let me introduce myself. I am Vaishnavi, a biotechnology graduate working as bioinformatician in India, and on this channel, I simplify bioinformatics for you. So, let's begin. Let's first understand what a read actually is. See, during sequencing, the sequencing machine reads small pieces of DNA and convert them into the nucleotide sequences. These sequences is called read. हम पहले सैंपल आया हमारे पास हमने डीएनए एक्सट्रैक्शन किया उसका फ्रेगमेंटेशन किया देन लाइब्रेरी प्रिपरेशन की उसको लोड किया अपनी सीक्वेंसिंग मशीन में नाउ हम पे कंप्लीट डीएनए सीक्वेंस के फ्रेगमेंट्स हैं अब जो डीएनए सीक्वेंस के फ्रेगमेंट्स हैं जब वो सीक्वेंसिंग मशीन में जाके न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको हम रीड बोलते हैं और हमारे पास मिलियंस ऑफ शॉर्ट रीड्स डीएनए सीक्वेंसेस जनरेट होते हैं जिनको हम रीड्स बोलते हैं लेटर these reads are aligned with the reference genome using the bioinformatics tools to assemble them together. So, see, whenever you download sequencing data, what you actually receive are millions of reads. Now, let's talk about read length. Read length simply means how many nucleotides are present in one read. See, आपके पास millions of reads generate हो रहे हैं by the sequencing machine. अब हर read में कितने nucleotide present हैं, उनका number ही हमारा read length होता है. Let's suppose if the read length is of 50 base pair. It means each read contains 50 DNA bases, 50 nucleotides. Okay. In many modern sequencing experiments, 150 base pairs are very common. Generally, long reads can improve alignment accuracy and gene assembly. These are the terms that you will understand when you will start working with the analysis part, and these terminologies become very important and you have to use them very frequently while explaining your results. And if the result is not getting generated, then what are the reasons? And these are the few of the major reasons due to which our result doesn't get generated. Next, let's understand single-end sequencing and pair-end sequencing. Before sequencing, DNA is first broken into small fragments. In single-end sequencing, each fragment is sequenced from only one side. So, for every fragment, the machine produces one read. Okay. Single-end sequencing is usually faster, cheaper, and simpler, but it gives less information about the DNA fragment. एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको दूंगी आपने सेंट्रल डोग्मा पढ़ा होगा उसमें डीएनए पॉलीमरेज पढ़ा होगा उसकी प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी होती है क्यों जिससे कोई भी गलती ना हो अब मान लो हम केवल सिंगल एंड रीड ले रहे हैं सिंगल एंड रीड सीक्वेंसिंग कर रहे हैं तो उससे क्या होगा कि वो केवल डीएनए को एक साइड से पढ़ेगा लेकिन पेयर एंड में क्या हो रहा है वो डीएनए को फॉरवर्ड भी रीड कर रहा है रिवर्स भी रीड कर रहा है इसका बेनिफिट क्या है कि हमको मोर एक्यूरेसी मिलेगी रीड्स में कैसे मिलेगी कि मान लो कोई रीड इतना बड़ा है कोई रीड इतना बड़ा है लेकिन पीछे से पढ़ने में वो रीड इतना बड़ा है लेट्स से अब अगर हम रीड को जब हम असेंबल करते हैं अलाइन करते हैं रेफरेंस जीनोम से तो हमको कोई भी गैप मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं पेरेंट्स रीडिंग में पेरेंट सीक्वेंसिंग में तो इससे क्या होगा एक बेनिफिट है कि हम कोई भी डीएनए सीक्वेंस को लूज नहीं करेंगे कोई भी गैप नहीं मिलेगा मैं उससे क्या होगा कि अगर कोई म्यूटेशन है कोई इंसर्शन है कोई जेनेटिक म्यूटेशन है तो उससे हमें सारी चीजें पता चल जाती है इजीली ये एक बेनिफिट होता है पेरेंट सीक्वेंसिंग का सो बेसिकली पेरेंट सीक्वेंसिंग में क्या हो रहा है डीएनए फ्रेगमेंट को सीक्वेंस कर रहे हैं हम दोनों साइड से दोनों एंड से फ्रॉम फॉरवर्ड टू बैकवर्ड फ्रॉम बैकवर्ड टू फॉरवर्ड ओके
अब पेरेंट सीक्वेंसिंग बहुत हेल्पफुल है फॉर बेटर जीनोम अलाइनमेंट, डिटेक्टिंग स्ट्रक्चरल वेरिएशन, इम्प्रूविंग जीनोम असेंबली। एज वी जस्ट टॉक्ड कि असेंबली करने में हमें आसानी होगी क्योंकि हम पे मिलियंस ऑफ रीड्स होंगे और उसके डबल रीड्स होंगे। उससे क्या बेनिफिट होगा, आगे से भी है पीछे से भी है। सपोज कोई कहीं ओवरलैप नहीं हो पा रहा सिंगल एंड में, लेकिन वो पेयर एंड में ओवरलैप होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, मोर एक्यूरेसी मिलेगी हमें असेंबली में, मोर असेंबली प्रॉपर होगी हमारी। So these are the few things that you have to remember. And even in the last video, if you have watched, I told you how to download the real NGS data from the NCBI. And when we randomly select the data, it comes to be a parent sequence data. Why? Because two files has been generated. And how the two files I recognize? Because in parent data, there is /1/2. Read one, read two, forward read, which is, and second one is backward read. But in the single end data, there is only one file get downloaded, which can have /1 or nothing. Like it just shows if you have one file, which that means single end data is present. If you have two files, two read files, then this shows you have pair end data. /1 is for forward read, /2 is for backward read. This is the identification of the parent data. Now, another very important concept is depth of coverage. Coverage simply means how many times a particular region of a genome has been sequenced. See, depth of coverage क्या है कि एक रीड, ठीक है ना, एक पर्टिकुलर रीजन कितनी बार सीक्वेंस हुआ है। सपोज एक दो तीन चार पांच, तो इसका डेप्थ ऑफ कवरेज क्या होगा, 5x। इसका क्या हुआ, 4x। मतलब जितना ज्यादा बार एक रीजन सीक्वेंस होगा उतनी ही हाई चांसेस होते हैं एक्यूरेसी के, उतना ही बेटर कॉन्फिडेंट रिजल्ट मिलता है हमें, मोर रिलायबल वेरिएंट डिटेक्शन होता है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि कई बार हमारा रिजल्ट नहीं आ रहा होता है तो हम क्या कहते हैं, लो कवरेज है। इट्स अ वेरी कॉमन टर्म फॉर अ बायोइन्फॉर्मेटिशियन कि लो कवरेज है इसलिए रिजल्ट नहीं आ पा रहा है। अब काफी लोग जो नॉन टेक्निकल होते हैं या वेट लैब में काम कर रहे हैं तो उनको समझाने के लिए कि लो कवरेज मतलब क्या, डेप्थ ऑफ कवरेज मतलब क्या होता है, तो इट्स सिंपल कि एक रीड कितनी बार हमारा सीक्वेंसिंग मशीन सीक्वेंस कर रहा है, तो उसको हम बोल देते हैं डेप्थ ऑफ कवरेज। जितना ज्यादा वो सीक्वेंस करेगा उतने ही असेंबली में आसानी होगी। क्यों, जैसा मैंने अभी आपको पहले बताया था कि मान लो एक रीड ये रहा, अगर ये रीड नहीं होता और ये रीड होता तो सपोज यहाँ पे ये जो गैप है, ये गैप यहाँ पे रहता और हमें इसका सीक्वेंस पता करने में दिक्कत आती। अगर केवल 3x कवरेज मिलता हमें, तो ना ऊपर की सीक्वेंसिंग में ना बीच वाला सीक्वेंस होता, तो ये गैप आ जाता। और ये गैप की वजह से क्या होता कि यहाँ पे हम पता ही नहीं कर पाते कौन सा न्यूक्लियोटाइड है। और मान लो कोई न्यूक्लियोटाइड ऐसा होता है जिसकी वजह से हमें कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हो रहा है ना। तो इसीलिए डेप्थ ऑफ कवरेज, पेयर एंड सीक्वेंसिंग, ये सब इम्पोर्टेंट है। और इनके टर्मिनोलॉजीज को जानना उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है अगर आप अपना बायोइन्फॉर्मेटिक्स में करियर बनाना चाहते हैं तो। See, for example, when sequencing the human genome, researchers often aim for around 30x coverage. Okay, so basically, higher the number of times the base is sequenced, the better the quality of the data. The better the chances you will be getting good results. Generally, minimum range for DNA is 10x, that is 10 million reads per sample, and for RNA is generally 20 to 30 million reads per sample is recommended. Okay, so in this video we discussed some very important NGS concepts. Understanding these basics will help you a lot when you start analyzing sequencing data in bioinformatics. In the next video on this channel, we will continue learning practical bioinformatics step by step. Make sure you check out my playlist where I am uploading the videos from the basic for a beginner to learn bioinformatics. If you found this video helpful,
Please don't forget to like the video, subscribe to the channel, and share it with your friends who are learning bioinformatics because sharing is caring. Thank you for watching, and I will see you in the next video. Bye bye.